So the story is the dog in the manger. Once a dog was looking for a nice and comfortable. हम लोग उसको comfortable कहते हैं, वो comfortable नहीं है, वो है comfortable. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. Okay? एक बार ऐसा होता है कि एक डॉग होता है, वो एक बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छी जगह की तलाश में होता है जहाँ पर वो बैठ सके, आराम कर सके, लेट सके. सो ही केम टू अ मेंजर. नाउ व्हाट इज़ अ मेंजर? मेंजर एक ओपन बॉक्स होता है जिसमें गाय का या बैल का चारा रखा जाता है ताकि जब वो वापस आ जाए कैटल शेड में अपने घर में तो वहाँ पर हे उसको मिलता है मेंजर के अंदर. तो मेंजर उसके खाना रखने की जगह होती है. तो जो डॉग होता है वो कैटल शेड में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद मुझे मेंजर दिखता है और वो मेंजर के ऊपर आराम से जंप करता है और उस पर आराम करने बैठ जाता है. इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून. आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड. बहुत ही गर्मी थी और कुछ देर के बाद में जो ऑक्स है वो वापस आते हैं फील्ड से. फील्ड मतलब खेत में काम करके, मशक्क़त करके, हार्ड वर्क करके वो वापस आते हैं अपने कैटल शेड में, अपने घर में. ही हैड वर्कड हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री. अब वो धूप में कड़ी मेहनत करके आया हुआ था और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी. किसे? ऑक्स को, बैल को. ही स्टूड इन हिज स्टॉल एंड वॉज प्लानिंग टू ईट द हे दैट वॉज पुट इन द मेंजर फॉर हिम. वो अपने स्टॉल में आके खड़ा हो गया. अब स्टॉल क्या होता है पता है? अगर आप कैटल शेड में जाएंगे जहाँ पर गाय को, बैल को रखा जाता है, उसमें स्टॉल्स होते हैं, अलग अलग जगह होती है जहाँ पर एक एक बैल को या एक एक गाय को बांधा जाता है. तो उस जगह जहाँ पर बांधा जाता है उसे स्टॉल कहते हैं. ठीक है, वो अपने स्टॉल में आकर खड़ा हो गया और वो बस खाने ही वाला था अपना चारा. हे कहते हैं चारे को, तो अब आगे से मैं हे कहूँगा. ठीक है, तो वो अपना हे खाने ही वाला था. ही वॉज अबाउट टू ईट हिज हे विच वॉज पुट इन द मेंजर फॉर हिम, जो मेंजर में रखा हुआ था. हाउएवर व्हेन ही रीच्ड फॉर द हे द डॉग सॉ हिम. जैसे ही वो चारे की तरफ बढ़ा, कुत्ते ने, डॉग ने उसे देख लिया. द स्टैंडिंग इन द मेंजर ही बिगेन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स. फिर वो खड़ा हो गया ज़ोर से और चिल्लाने लगा, भौंकने लगा ऑक्स के ऊपर. कौन? डॉग. ईच टाइम दैट द ऑक्स केम नियर द हे द डॉग स्नार्ल्ड, बार्क्ड एंड स्नैप्ड एट द ऑक्स. जैसे ही, हर वक्त जैसे जैसे ऑक्स खाने की तरफ बढ़ता, हे की तरफ बढ़ता, जो डॉग था उस पर गुर्राने लगता, भौंकने लगता और स्नैप्ड करने लगता. मतलब ज़ोर ज़ोर से अपने दांत बजाकर उसे डराने की कोशिश कर रहा होता. स्नार्ल्ड का मतलब होता है गुर्राना, बार्क का मतलब होता है भौंकना और स्नैप की तरफ मतलब ज़ोर ज़ोर से अपने दांतों को बचाना, ऐसे ताकि सामने जो है वो डर जाए. ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज हे. वो ऑक्स को खाना खाने दे ही नहीं रहा था. ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट एनिमल्स. अब एक बात ध्यान दीजिए, ऑक्स एक को कहते हैं और एक से ज़्यादा है तो ऑक्सन कहते हैं. तो ऑक्सन जो होते हैं, जो बैल होते हैं, वो पीस लविंग मतलब अमन पसंद होते हैं, ज़्यादा झगड़ा करना उन्हें पसंद नहीं होता. बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फॉर मी. अब बार बार कोशिश करने के बाद में भी द डॉग वॉज नॉट अलाउिंग द ऑक्स टू ईट. सो द ऑक्स गॉट एंग्री, द ऑक्स गॉट अपसेट एंड द ऑक्स स्टार्टेड स्पीकिंग फर्मली. बहुत ही सख्त आवाज़ में उसने डॉग से कहा, डॉग इफ़ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट. अगर आपको मेरे साथ में मेरा खाना शेयर करना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यू नाइदर ईट द हे नॉर अलाउ मी टू एन्जॉय इट. लेकिन ना तो आप खुद खाते हो और ना ही आप मुझे इन्जॉय करने देते हो मेरा खाना. इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू. वो तो आपके कोई काम का है ही नहीं. जो डॉग्स होते हैं वो हे नहीं खाते हैं. देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड. फिर आप मुझे, मेरा फेवरेट फूड है वो मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे हो. सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी है? यहाँ पर क्या सीखने मिलता है? डोंट बी ग्रज. बी ग्रज मतलब अगर कोई चीज़ किसी को मिलती है उसे देखकर हमें उदास नहीं होना चाहिए, हमें उसको देखकर हसद या हमारे अंदर जलन नहीं होनी चाहिए कि नहीं उसे मिल रहा है तो उसे मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए. The questions are given on page number 5. A. Name the person who first told these fables. Aesop is the name of the person who first told these fables. B. What did the stag like about himself? Why? The stag liked his curving antlers because they made him look handsome. C. What was the stag unhappy with? Why? The stag was unhappy with his legs because they were ugly and spindly with small feet. D. What did the dog do when the ox went near the manger? The dog began to bark loudly
when the ox went near the manger. E. Write the message of each of these two stories. Number 1. We should not dislike things that don't look pretty because they are often more useful to us. Number 2. We should not begrudge others what we don't enjoy ourselves. Read aloud the following speeches from the lesson. A. What the stag said when he saw his reflection. How handsome I look! How beautiful are these curving antlers! How they add to my beauty! How graceful they look! And after looking at his legs, he said, Look at my legs, they are so ugly, all spindly with small feet. How I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers. B. What the stag said at the end. I realize now that my ugly feet saved my life. I was so proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. Very often we dislike things that are most useful to us. C. What the ox said to the dog in the manger. Dog, if you wanted to share my dinner with me, I would not mind it. But you neither eat the hay nor allow me to enjoy it. It is of no use to you, then why don't you let me have my favorite food? Don't begrudge others when you don't enjoy yourself. Now find the smaller words hidden in the following words. Number 1, delighted. Did, get, hide, light, height. Number 2 is reflection, and the smaller words are 1, fit, let, elect. Graceful, and the smaller words are gel, ace, are, race, face. The next word is hunter, and the smaller words are hen, run, ten, net, turn. The next word is thicket, and the smaller words are hit, hike, chit, ticket, thick. Growth, and the smaller words are cut, to, row, grow, throw. Dislike, and the smaller words are die, lie, lid, like, slide. Afternoon, and the smaller words are net, fat, foot, after, noon. And the next word is firmly. The smaller words are film, firm, limey, miry, rhymy. Next word is upset. The smaller words are pest, pet, put, set, up. Find the synonyms for. The first word is delighted, and the synonyms are happy, joyful, thrilled, overjoyed. The second word is beautiful, and the synonyms are pretty, handsome, good looking, charming, attractive. The next word is disgusted, and the synonyms are repulsed, horrified, appalled, offended, and displeased. The next word is bounded, leaped. The synonyms are leaped, jumped, hopped, bounced, sprang. The stag saw his reflection in water. Name at least 3 things in which one may see a reflection, and name 3 things that do not reflect anything. Of course, mirror. We can see our reflection in the mirror. Water, steel plate, window glass, and doorknob. Now 3 things that do not reflect anything. Now here, those things are wood, rough stone, paper plates, leather, cotton clothes. Okay, so these are the things, 3 things in which we may see a reflection, and 3 things that do not reflect anything. Now we'll go to the next question, which says find and write the names of 10 countries. Number 1, India, China, Sri Lanka, Pakistan, Bhutan,
Brazil, Australia, Indonesia, Japan, Italy. So these are the names of the 10 countries, okay? Now with the help of a teacher, make a collection of idioms and proverbs that mention birds and animals. Now first, number 1 is the elephant in the room. That's really my goat. Let sleeping dog lie. Now these 3 are idioms. Now I'll discuss the proverbs. Where there is sugar, there are bound to be ants. Be wise as serpents, gentle as doves. Don't bargain for fish which are still in the water. Now let's go to birds. Number 1, wild goose chase. Watch something like a hawk. Quit cold turkey. Now these 3 are idioms that mention birds. Now we'll discuss proverbs. Birds of a feather flock together. A bird in hand is worth 2 in the bush. The early bird catches the worm.